दोस्तों कैसे हैं आप सब। पहली बात तो ये है कि स्वागत है आपका एक बार फिर से इस लाइव स्ट्रीम पर ऑन द चैनल कॉल्ड ऑल यू हियर फॉर द क्रिकेट। वेल इट्स एक्चुअली कॉल्ड नाउ क्रिकेट विद जेमी। हल्का सा नाम मैंने चेंज किया आप ही के रिक्वेस्ट पर। बहुत सारे व्यूअर्स ने सजेस्ट किया था कि आप चैनल का नेम बदली। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं, बट इट्स स्टिल मी। वी स्टिल टॉकिंग क्रिकेट। आई स्टिल गॉट माय कप ऑफ कॉफी। लेट्स टेक अ सिप एंड गेट द स्ट्रीम स्टार्टेड, शैल वी। क्या बात है, क्या बात है। कितनी बार कह चुका हूं, क्रिकेट, आप, मैं, कॉफी, बंदे के और क्या चाहिए लाइफ में। वेल इट्स बीन अ व्हाइल सिंस आई सॉ यू। तकरीबन 8 9 नहीं नहीं शायद 10 दिन हो गए आपसे मिले हुए, क्योंकि उस बीच मैंने कहा था कि भैया एशिया कप के बाद और फिर वर्ल्ड कप के बाद थोड़ा तो ब्रेक बनता है, तो 4 दिन का ब्रेक लिया मैंने। उस बीच काम भी किया कुछ, एक पेंडिंग शूट था एक वेब सीरीज का, इसी लुक को लेकर जो आप मुझे देख देख चुके हैं 3 4 times during the World Cup. I had to scoot off here and there to shoot for the same series. That got wrapped up in Bombay last week. While I was there, my first official Hindi film release, The Archies, came out. I was at the premiere, and a lot of fantastic comments have come from viewers of this channel and viewers of my other YouTube channels and social media. बहुत दोस्तों और गुमनाम लोगों ने मुझे कंग्रेचुलेट करके मैसेज भेजे और सोशल मीडिया पर. So yeah, thank you to all of you. But I know a lot of you are thinking कि भैया ये बंदा निकल कहाँ गया, क्रिकेट की बातें जारी क्यों नहीं है इस चैनल पर। तो क्षमा चाहूंगा, देरी हो गई। एक मैच मिस भी किया मैंने, 2 मैच सॉरी, द लास्ट ऑस्ट्रेलिया T20 एंड द फर्स्ट मैच व्हिच एक्चुअली वॉश्ड आउट बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। लेकिन आज के मैच में हम बात करेंगे, एक तो बारिश होगी क्या, आसार हैं, काफी चांस है बारिश के। पर उससे बड़ी बात दोस्तों ये है कि अगर बारिश ना भी होता तो बहुत बहुत कम T20s बाकी हैं टीम इंडिया के लिए, keeping in mind the T20 World Cup, which starts in just about 6 months, a little over 6 months in the West Indies and North America next summer. अगर आज का मैच वॉश आउट होता है तो फिर 4 मैचेस बचे। उम्मीद करते हैं आज का मैच होगा 2 T20Is अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। उसके बाद जैन के महीने में यानी कि अगले साल में अफगानिस्तान टीम आएगी केवल 3 T20Is खेलने इंडिया में। क्या ये स्क्वाड जो अभी साउथ अफ्रीका में है, क्या वही स्क्वाड अफगानिस्तान के सामने खेलेगी? मुश्किल है कहना, क्योंकि the revolving doors that are the BCCI selection committee meetings don't quite give you an indication whether there's any continuity, any stability surrounding the T20I team. जाहिर सी बात है कि जब विराट कोहली और रोहित शर्मा इस सीरीज में नहीं है, यानी कि साउथ अफ्रीका में नहीं है फॉर द T20I leg, it's tough to see them come back and play 3 T20Is against Afghanistan just 4 days after the tests in South Africa. उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आईपीएल बचेगा दोस्तों for the selectors and the team management to decide कि वेस्ट इंडीज में T20I स्क्वाड वर्ल्ड कप क्या होना चाहिए। बहुत चर्चा हमने करी इसी चैनल पर। आई टेकन योर क्वेश्चंस, आई शेयर्ड माय व्यूज on Rohit Sharma and Virat Kohli. You cannot rule them out of contention for the T20 World Cup just because the team does need a stable leader. It needs batsmen who bring a lot of experience. तो who knows? I mean, KL Rahul might come back. पर अगर ये खिलाड़ी वापस आते हैं तो फिर तिलक वर्मा का क्या होगा, रिंकू सिंह का क्या होगा, ऋषभ पंत तो लगता है जरूर T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनकी वापसी जो हम सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उनकी वापसी सिर्फ आईपीएल में होगा। एंड द आईपीएल, लेट्स फेस इट, will not be enough for Rishabh Pant, as brilliant as he's been as a player across 3 formats, for him to come back into a big tournament like the T20 World Cup. Bowling से भी मुझे काफी सेटल लग रही है। आई नो रवि बिश्नोई इज रैंक नंबर 1, ही श्योरली हेल्ड डाउन हिज प्लेस। कुलदीप यादव आएंगे तो वो भी उनको टक्कर देंगे, but barring a few weak links in there, the bowling, frankly, I'm not too concerned about it. I'm more concerned about the makeup of the batting, क्योंकि आप बैटिंग देखिए, बैटिंग ही हमेशा टीम को ज्यादा लेट डाउन करती है इन बड़ी टूर्नामेंट्स में एज कंपेयर टू द बॉलर्स। मैं चाहूंगा कि रिंकू सिंह जाए अगले साल के T20 वर्ल्ड कप में। मैं चाहूंगा कि यशस्वी जायसवाल भी वहां पे जाए, तिलक वर्मा वहां पे जाए, जितेश शर्मा वहां पे जाए। लेकिन उस सब के लिए दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आज का T20 एट सेंट जॉर्जेस पार्क, तीसरा T20, वो 3 T20 मैचेस अफगानिस्तान के साथ, और फिर आईपीएल का पहला जो हिस्सा है, पहला महीना जो होगा अगले साल आईपीएल का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज दैट कुड डिसाइड द फाइनल मेकअप ऑफ इंडिया T20I वर्ल्ड कप स्क्वाड। कुछ प्लेयर्स शायद फॉर्म खोएंगे उस महीने के अंदर, शायद उस महीने के अंदर कुछ प्लेयर्स फॉर्म दिखाएंगे जो कि सिलेक्टर्स को शायद प्रॉम्प्ट करे उनको ऐड करने स्क्वाड में, बिकॉज दैट इज हाउ बीसीसीआई सिलेक्शन वर्क्स। बट
कीपिंग इन माइंड 6 months डाउन द रोड आज का जो मैच है, लेट्स होप कि बारिश ना आए। आसार हैं, जैसे मैंने कहा था, काफी काफी बारिश फोरकास्ट है, खासकर शाम को, और हमारे शाम को वहां दोपहर, अर्ली इवनिंग एट सेंट जॉर्जेस पार्क। अभी तक कोई भी प्रैक्टिस नहीं हो चुका है हमारे प्लेयर्स के लिए। सो अ लॉट ऑफ प्लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम ईशान किशन एट द टॉप डाउन टू नंबर 11 द बॉलर्स, दे आर गोइंग टू वांट टू गेट अ मैच इन। देखते हैं क्या होता है, बट लाइक आई सेड, आज का मैच तीसरा T20 आई, वो 3 मैच अगेंस्ट अफगानिस्तान। लेट्स होप कि जो भी सोच सिलेक्टर्स, टीम मैनेजमेंट, कोच राहुल द्रविड़ साहब, जो भी ये लोग सोच के जा रहे हैं 6 महीने डाउन द लाइन, वो ज्यादा टिंकर ना करे। जो टीम आप आज खिलाओगे, जो टीम आप तीसरी T20 में खिलाओगे, जो टीम आप अफगानिस्तान के साथ खिलाओगे, भले ही लोग आएंगे, कुछ प्लेयर्स को रेस्ट मिलेगा, जस्ट कीप द कोर स्क्वाड। डू नॉट wait until the IPL to try and decide. Because IPL, it'll be too late. It might also be unfair on a lot of players who've been doing successfully in the brief T20I chances they've got, like the Ireland Tour, the Australia Series, and the Asian Games as well. So, देखते हैं क्या होता है. But फिलहाल, all eyes on this evening's match, 8:30 St. George's Park. Let's hope the rain stays away, and let's hope that whatever time this Indian squad has, the remaining 5 T20Is before the IPL, that will be the final criteria for selection for the T20I World Cup, that सभी performers, सभी fringe players जिनको मौका मिले, वो पूरी तरीके से उन मौकों को अपने मुट्ठी में पकड़ के कुछ काबिल परफॉर्मेंस दिखाए, because we cannot afford to go into another T20I World Cup with a hodgepodge squad. क्या कहते हैं आप लोग? चलिए देखते हैं कि कमेंट कौन कौन करने आया है। बहुत बहुत दिनों बाद कुछ जाने पहचाने नाम मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ, अतुल पावर सिंह, जय भाई, गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड। इंग्लैंड ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया। बेन फोक्स एंड होपफुली दे डू नॉट प्रिपेयर गड्डे दिस टाइम। यस, बेन फोक्स, लॉन्ग ओवरड्यू, लॉन्ग ओवरड्यू रिकॉल फॉर बेन फोक्स। गड्ढे, पता नहीं यार, गड्ढे ना, गड्ढे में अपनी टीम भी फंस सकती है। आई जस्ट वांट टू से, लाइक, आजकल, आई मीन, I'll take a flat track if it brings something different to watch, you know. CFC ब्लू कह रहे हैं, जे बाय यू एक्टेड बेटर देन अदर नेपो किड्स। शुक्रिया, पर आप प्लीज मुझे नेपो किड्स के टैग में ना डालें प्लीज। मैंने कल एक वीडियो भी किया, बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि आप भी नेपो किड हो। भाई मैं 42 साल का हूँ, अगले महीने आई बी 43। आई एम नॉट अ किड फर्स्ट ऑफ ऑल, और अगर मैं नेपो किड होता, जैसे कि बहुत लोग मुझे कह रहे हैं, तो भाई मेरे फादर मुझे 20-25 साल पहले लॉन्च करते। उन्होंने कभी मेरी सिफारिश नहीं की। उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा कि भाई तुम एक्टर बनो। ऐसे शक्ल, ऐसे फ्रेम वाला बंदा जो बिल्कुल नॉन एक्टर है, अगर उसको किसी को लॉन्च करना था, तो आपको लगता है कि एक छोटे मोटे रोल में, माइक गोम जैसे रोल में, कोई मुझे लॉन्च करके नेपो किड ब्रांड में डालता? नहीं। बट थैंक यू फॉर ऑल द लवली लवली कमेंट्स। बहुत बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स आए। जैसे कि मैंने कहा था, गुमनाम लोगों ने मुझे सोशल मीडिया पर टैग किया है, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, सेइंग यू नो वी रियली लाइक योर सीन। सो थैंक यू ऑल। क्रिकेट कह रहे हैं, जडेजा T20 में पावर पे में बॉलिंग नहीं करते, लायबिलिटी इन। हाँ, इंडिया के पास अभी कोई कोई T20 आई स्पेशलिस्ट बॉलर नहीं है, स्पिनर। अक्षर हैज अ बेटर रिकॉर्ड, यस, पर अगेन वेस्ट इंडीज वाले विकेट्स पर अक्षर कितना कामयाब होंगे? He's done decently well, but I think they need to perhaps not concern themselves with finding a spinner in the power play. आपके पास काबिल तेज गेंदबाज हैं, so maybe yes, keep an option, और अगर आप ऑप्शन चाहते हैं तो मैं भी आपकी बात से सहमत हूं। जडेजा को नहीं होना चाहिए, अक्षर पटेल को होना चाहिए। शुभम दुबे को गायब कर दिया, श्रेयस को वाइस कैप्टन से भी हटा दिया जाएगा, जडेजा वाइस कैप्टन, पता नहीं भाई। इट्स लाइक आई सेड, इट्स अ रिवॉल्विंग डोर्स, chaos room supreme in the best of times when it comes to the BCCI and the selectors. श्रेयांश कह रहे आईपीएल के बेसिस पर ही होना है वर्ल्ड कप सिलेक्शन। These T20s are too far and too few and too far. Correct, they're too far, but let's say let's say a Rinku Singh who's done exceedingly well in the IPL for KKR. He's done very well in almost every match he's played for India. Let's say he heads into the IPL having played, I don't know, a dozen odd T20Is. What if he loses form? Are you going to drop Rinku Singh because of 6-7 bad matches? क्योंकि देखिए, आपके पास 2 महीने का आईपीएल नहीं है सिलेक्शन के लिए। यू हैव टू अनाउंस टू द आईसीसी योर स्क्वाड्स जस्ट अराउंड द हाफ वे स्टेज। तो ये मान के चलिए आपके पास सिर्फ 1 महीना है आईपीएल का। Are you going to discard what Yashasvi Jaiswal has done for the last 1 year? Are you going to discard what a Tilak Verma or a Rinku Singh have done
in the last 6 months or so. I mean, let's throw the IPL in, just because after a long time of doing well for India, they suddenly have 5, 6 poor matches for the IPL. नहीं ना, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आईपीएल पे सिलेक्शन मत करना। ऐसा कोई खिलाड़ी आपको लगता है जो अभी इस स्क्वाड में नहीं है, जो इंडिया के T20 स्क्वाड में नहीं है पिछले 3, 4 महीने से, जो अचानक आईपीएल में अच्छा करके आ सकते हैं? मुझे फिलहाल ऐसा कोई नाम नहीं लग रहा है। बट अगेन, if some keeper, maybe some franchise has a keeper who opens and suddenly he scores a couple big 50s in the first 3 matches, are you going to tell Jitesh, जिनका रोल फिनिशर है, जितेश भाई हट जाए यहां से? आई थिंक डू नॉट। मैं मानता हूं कि होगा, जरूर 2, 3 नाम ऐसे आएंगे जो आईपीएल फॉर्म पे सिलेक्ट होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से वो बहुत बहुत अनफेयर होगा, अनफॉर्चुनेट होगा उन खिलाड़ियों पे जो पिछले 3, 4 महीने से T20 स्क्वाड के हिस्सा रह चुके हैं, जिनको कम मौके मिले हैं, लाइक अ जितेश, लाइक अ तिलक वर्मा। आई वुड वांट टू सी दीज प्लेयर्स, एंड मैं मानता हूं रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत, अय्यर, बड़े बड़े नाम्स, बुमराह, शामी, ये जब नहीं खेलते हैं सिराज, तो आपको रिप्लेसमेंट प्लेयर लाने चाहिए। लेकिन देयर इज वन थिंग ऑफ हैविंग अ बिगर प्लेयर कम बैक, एंड देयर इज वन थिंग फ्रॉम पिकिंग समवन हु इज डन वेल इन 1 मंथ ऑफ द आईपीएल, जो कि शायद इन पिछले 3, 4 महीनों में टीम के हिस्सा नहीं है। दैट्स माय प्रॉब्लम विथ picking the final squad based on 1 month of IPL form on flat Indian wickets. जो टीम वेस्ट इंडीज गई थी, जो टीम आयरलैंड गई थी, जो टीम एशियन गेम्स गई थी, जो टीम ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली गई, खेला गया, जो टीम अभी साउथ अफ्रीका गई, उन्हीं प्लेयर्स में से आप प्लीज T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड चुनिए। बेशक सिराज, बुमराह वापस आएंगे, कुलदीप वापस आएंगे, हो सके विराट और रोहित वापस आए, but I would not want to see these players who've been given a chance suddenly told बेटा साइड हट ले। ड्रीम 11 टीम चाहिए सर। मैं सोचूंगा ड्रीम 11 टीम, मैंने अब तक अपनी टीम नहीं बनाई। मैं कहूंगा इंडिया के तो आप टॉप 4 को तो ले लो। आप जायसवाल को लीजिए, आप ईशान किशन को लीजिए, आप गायकवाड को लीजिए अगर वो आज खेलते हैं, स्काई को लेना, अम, बिश्नोई, अर्शदीप। एक सेकंड, मैंने एक नोट पैड खोला था, मैंने टीम्स लिस्ट के लिए। एक सेकंड मैं उसको खोलता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि साउथ अफ्रीका, हाँ, फ्रॉम साउथ अफ्रीका यू नीड एडन मार्करम। अगर हाइनरिक क्लासन खेलते हैं तो आंख बंद करके उन्हें आप लिए। हाइनरिक क्लासन का क्या है, वनडे में, वर्ल्ड कप में मैंने बहुत बार इनको वाइस कैप्टन बनाया था, क्योंकि वो लंबी पारी खेलते हैं। T20 में अगर वो 4, 5 पे आते हैं तो इनका बड़ा इतना इंपैक्ट नहीं होगा जितना मैं मानता हूं। कोई मैथ्यू ब्रिट्स के, आई वाज लुकिंग एट हिज स्टैट्स, ही हैज गॉट डिसेंट स्टैट्स, और क्योंकि शायद ये अपना पहला या दूसरा मैच खेल रहे, इन पे ज्यादा दाव मत लगाना। आई विल स्टिल से, हालांकि सीरीज साउथ अफ्रीका में है, वो फॉर्म टीम में है, मैं 11 में से 7 इंडियन प्लेयर्स चुनूंगा और मैं 4 साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स चुनूंगा। आई विल टेक रीजा हेंड्रिक्स, आई विल टेक एडन मार्करम, अगर जो क्लासिन खेलते हैं मैं उनको लूंगा। देन आई वुड मोस्ट लाइकली टेक मार्को यैंसन। आई विल नॉट टेक केशव महाराज, शामसी को मैं लूंगा नहीं, मैं उस लेफ्ट आर्म सीमर को लूंगा अगर वो खेलते हैं, जो कि ज्यादा इंडियन विकेट्स ले पाए, शायद एक आगे और 2 पीछे, और फिर वो लंबे छक्के भी मार सकते हैं। बाकी अगर आप इंडियन टीम के बारे में बात करें, let me look at who I've written down. हाँ, अगर गिल खेलते हैं, गिल को आप ले सकते हैं। अय्यर, हाँ, आई वुड टेक इंडियाज 2 ओपनर्स। सूर्या 4 पे आएंगे, श्रेयस 3 पे आएंगे, आप इनको ले सकते हैं। जडेजा शायद बैटिंग ना कर पाए और इन पिचेस पे ज्यादा असरदार नहीं रह पाए, लेकिन आप उनको ले सकते हैं। बिश्नो यू हैव टू टेक इन मोर देन सिराज, आई विल टेक अर्शदीप। हो गए मेरे 11। हाँ, 7 इंडियन प्लेयर्स और 4 साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स। Ashutosh, why was Akshar rested from T20I squad? Very strange, because he's been doing decently well in Smat and Vijay Dare. Dubey being dumped. See, Dubey was one of those players. I know a lot of you consider him an all-rounder, but वो domestic में इतना ज्यादा bowling नहीं डालते हैं, और IPL में तो बिल्कुल bowling नहीं डालते। He was someone just playing because the big names were rested. So I'm not too surprised that he's been left out. I'd be very very surprised if a Tilak and a Rinku and a Jaiswal type players are left out when the big names come back. That would be a problem. Yeah, I've said it many times. I don't think Jadeja should be a part of India's T20I squad going forward. Will Mohsin get a chance if he bowls well? It depends. I don't think he's at full fitness though. मुश्किल है उनके लिए। गौरव कह रहे हैं गुड मॉर्निंग।
Why don't बीसीसीआई considering slow medium pace all-rounders? भाई आप मुझे ऐसे तीन मीडियम पेस ऑलराउंडर्स बता दें जो कि डोमेस्टिक में सईद मुश्ताक अली में विजय हजारे में और फिर आईपीएल में लगातार ओवर्स डालते हैं। अगर आप मुझे ऐसे तीन नाम दे सकते हो गौरव मेरा, उसी बेसिस पर मैं आपको अपना जवाब दूंगा। मैं आपकी व्यू पॉइंट समझ सकता हूं कि बीसीसीआई ऐसे प्लेयर्स क्यों नहीं चुन रहे, लेकिन ये प्लेयर्स है कौन? आप मुझे तीन तीन सीम बॉलिंग अच्छे बैटिंग वाले ऑलराउंडर्स का नाम बताइए जो कि सैयद मुश्ताक अली में, विजय हजारे में और आईपीएल में बॉलिंग डालते हैं। तो मैं आपको जवाब दूंगा कि मेरे नजर में ऐसा कोई नहीं है। माय हीरो ऋतुराज गायकवाड़, बढ़िया बढ़िया। ए बी सी डी, हे जेमी, सॉ यू इन द मूवी, फेल्ट सो गुड, थैंक यू माय फ्रेंड, great work, and for India England test series I have no hopes on the pitch, even if we lose they'll prepare a rank turner. Yes, first of all thank you for your lovely comments my friend। जो भी आपका असल नाम है ए बी सी डी, let me know what your real name is। um if India wants to stop baseball from succeeding, they're going to have to give rank turners because baseball चलता है पाटा विकेट पर। अगर आप इस इंग्लैंड टीम को पाटा विकेट दोगे तो चांस है कि वो बेसबॉल खेल के आपको काफी आ, मुश्किलों का सामना देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप स्पिनिंग ट्रैक दोगे, हो सके आप भी मैच जीतो, लेकिन इंग्लैंड के पास वो भी चार स्पिनर्स लेके आए। एंड वी जस्ट सॉ व्हाट 7 मंथ्स अगो, टॉड मर्फी रुकी डेब्यू 10 मैच खेल चुके थे उससे पहले, उन्होंने इंडिया की हालत टाइट करी। उन्होंने विराट कोहली की हालत बहुत टाइट करी। मैथ्यू कुनमिन जो कि ओरिजिनल स्क्वाड में नहीं थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने आके डेब्यू पे 6 विकेट लिया। और फिर नेथन लायन तो नेथन लायन है। सो माई concern about rank turners is yes, it gives India's bowlers Ashwin, Jadeja, Kuldeep, Akshar, जो भी खेले, it gives you a massive advantage। लेकिन क्योंकि इंडियन टीम के बैट्समैन भी बहुत बहुत खराब है स्पिन के सामने, अगर इंग्लैंड के चार स्पिनर्स आ गए सामने, तीन भी आ गए, तो आप भी मैच हार सकते हो। हमने देखा था इंदौर में। तो it's going to be a very very risky proposition because on the one hand you give flat tracks, baseball could smash you, you give rank turners, you could lose a match here or there। So jo bhi kaho, it's going to be the most interesting test series of 2024। Nihar is back, hey Jamie, how are you? I'm very fine, how are you? Will Ishan play at number 3 in this series, as there are rumors that he might replace Kohli in World Cup 2024? um if Ishan plays, he either opens or he bats at number 3। लेकिन आपके पास शुभमन गिल है, आपके पास यशस्वी जायसवाल है, आपके पास श्रेयस अय्यर है, आपके पास सूर्य कुमार यादव है। हाउ डू यू फिट हिम? You're expecting कि at some point before the IPL हार्दिक पांड्या comes back। तो ईशान किशन के चांसेस बहुत बहुत कम होते जा रहे हैं। अगर आप इनकी बैटिंग कम करते रहते हो और वो नंबर 5 या फिर 6 पे आते हो, फिर उनसे बेहतर नंबर 6 आपके पास जितेश शर्मा है। So it looks unlikely that Ishan Kishan will play. Now, रही बात विराट कोहली की, how are you saying that he is going to he might replace? Virat Kohli has not played a T20I game for over a year now. So actually what you should be asking me is, will Virat Kohli replace Ishan Kishan? Ishan Kishan has been a part of every T20I squad since then. Virat Kohli technically is not even an active T20I player. So I think the comparison about Ishan replacing Kohli ulta hai। Will Virat Kohli come back and will he replace Ishan Kishan? हार्दिक कह रहे हैं, हेलो जय भाई, मैं तो अब इंडियन टीम से एक्सपेक्टेशन करना छोड़ दिया है। बिल्कुल सही बात, फाइनली आपने मेरी बात मान ली। बस अब जो भी होगा देखा जाएगा। बिल्कुल सही, मैं कह रहा हूं सारे इंडियन फैंस को इस अप्रोच से क्रिकेट देखना चाहिए। बहुत बढ़िया। अभिनव कह रहे विराट अगर खेलेंगे तो फिर भी हाईएस्ट स्कोर फॉर इंडिया वही होंगे वर्ल्ड कप में। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर टीम सेमीफाइनल्स तक भी नहीं पहुंचेगी। My T20 World Cup squad as of today: Jaiswal, Gaikwad, Tilak, Sky, Hardik, Rinku, Jitesh, Akshar, Bishnoi, Bumrah, Arshdeep, Kishan, Gill, Mukesh, Kuldeep। ठीक है। Still don't see what Mukesh offers, but बाकी मुझे ठीक लग रहा है। Is anyone missing? Hardik comes back. You've got rid of Jadeja. Good. Okay. Your spinners are अक्षर, बिश्नोई, कुलदीप। मैं शायद एक और फास्ट बॉलर को लूंगा मुकेश के बदले, बट बाकी ठीक लग रहा है मुझे। हेलो पवन सुरेश। रिक मिश्रा सिंह, जेमी सर थॉट ऑन किशन इज नंबर 3? नहीं, नॉट नंबर 3।
I would like to see either Shreyas or Gill batting at number three in the West Indies because the mission right now should be the best possible 15, 16 for the West Indies. And Ishan Kishan did well as an opener, but number three पर शायद वो फंसेंगे इनका डॉट बॉल रेशियो बहुत हाई है. Atul saying good morning. Kanika Jain is saying any hope for Rishabh Pant coming back if he performs well. I would love to see Rishabh Pant come back. I mean, I've been very critical of him and his numbers in T20Is. But right now, all three formats, you need that maverick person called Rishabh Pant back. But if you're not playing domestic, if you're not playing Ranji Trophy, if you're not playing Test cricket, if you're coming back after well over a year and a half almost, what, well, let's say 13, 14 months, if you're coming straight back and playing the IPL, I would love to see him come back and pick up from where he left off. But if he doesn't get, 25, 30 more than these runs in his first five, six innings, I would just not want to risk him. But again, it's a very, very tricky one. Personally, I don't think 1 month of the IPL would be enough to for the selectors to judge Rishabh Pant. That's just my feeling. How much will you miss him in a test series? Oh, we'll miss him the most, the most, the most. अभिनव कह रहे हैं जायसवाल गिल स्काई श्रेय जितेश हार्दिक ये लोग ये छह कौन है और आपने केवल छह नाम क्यों लिए दोस्त पवन सिंह आई एम a big fan of you. Thank you, my friend. Thank you so much. Very kind of you. एनीवेज एक नजर डालते हैं आज के मैच पर पिच बहुत बहुत कम वहां पे मैच हो चुके हैं rain is going to be a factor. um, I don't know. I mean, बहुत बहुत कम वहां पे T20s हो चुके हैं ओवरऑल. हाई स्कोरिंग ग्राउंड तो नहीं है. आई थिंक कितना एक 160 के आसपास वहां पे 165 मैंने कहीं पढ़ा वहां पे हाईएस्ट स्कोर है. With rain around, probably you'll see the toss winning captain choose to field. Like I said, India's bowlers, especially the pace bowlers, they need as much practice as can be. You just have to get that in, because death bowling is a problem. The power play overs have been a problem over the last 1 year. Mission 2024 के लिए आपकी bowlers को वो बेहतरीन lines डालने पड़ेंगे, wides कम करने पड़ेंगे, boundary balls कम करने पड़ेंगे. तो उस लिहाज से maybe it does make sense to perhaps bat first and put your bowlers under pressure to try and defend the total. Let's see आज क्या होता है. India under 19 got thrashed by Pakistan under 19. Yes, I heard that. Is strike rotation irrelevant completely in T20s? I've seen recently India playing looking more boundary and higher dot ball, but even women's team Shefali plays. Dot ball Dot balls are a problem. Ishan Kishan has an ability to catch up in 1 over, but any player, no matter what their skill is, no matter how many years they played, if their dot ball count is high, mere hisab se, they have no place being in a T20 team. Chris Gale, one of the biggest monstrous hitters of a cricket ball, in the last 5, 6 years of his career, he struggled with dot balls. But that's a man who could get 30, 35 in an over twice in an innings. Beyond that, when I see Ishan Kishan, when I see Virat Kohli, when I see them with a very, very high dot ball percentage, I know that Ishan Kishan थोड़े मैवरिक टाइप है लाइक ऋषभ पंत वो कुछ एक ओवर में तीन चार छक्के मार पाएंगे बट देन आई लुक एट विराट कोहली he'll always be 85 not out 78 not out like someone mentioned he'll be the highest run scorer in a T20 World Cup but रोहित शर्मा ने ये बात खुद कही कि there's no need for an anchor. So if there's no need for an anchor, and you have players like Rituraj Gaikwad, fantastic striker, got a great 100 about a week ago, but his dot ball percentage often ends up being high. Do you want more than one player in your 11 hoping to win a World Cup, Ashutosh, that has a high strike rate, a high dot ball count? I would say no. अगर आपको एक ऐसा खिलाड़ी सिर्फ एक प्लेयर रखना है जिनका डॉट बॉल काउंट हाई हो I would personally want to see him be an opener, never a number three, which is why I love the fact that Shreyas Iyer will bat at three. I love the fact that Surya bats at four. I love the fact that Hardik Pandya, when he comes back, will bat at six. And I hope that Jitesh Sharma bats at number six. If you have to pick one opener, one player who's got a high dot ball count, it should be an opener because if that opener gets the sixth over, the last over of the power play,
and he goes big, he can recover. But you cannot have more than one player with a high dot ball percentage. James, I hope Jaiswal is the opener for the next five T20Is. I think he should. Manjekar on Cricket Info said, "एक तो Cricket Info पढ़ना बंद करो भाई." Ritu and Gill provide stability. I mean, with all due respect to Mr. Manjrekar, I've had the opportunity and the pleasure of meeting him many, many times, having some great discussions. अगर आपको T20 में stability चाहिए ना, T20 छोड़ दीजिए आप. T20 is not a game for stability. And anyone who believes otherwise, प्लीज लेट मी नो आई विल डू अ शो और हम दोनों आमना सामना करेंगे इस बात पर. T20 is not a game for stability. If you're playing for stability in T20 क्रिकेट, फिर तो आप मेरे साथ वीकेंड्स पे आकर आप मेरी टीम के साथ खेल लीजिए. मेरे पास बहुत ऐसे प्लेयर्स हैं जो स्टेबिलिटी के साथ खेलते हैं. ना हम कभी कोई टूर्नामेंट जीत पाए और ना ही आपकी अंतर्राष्ट्रीय टीम, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए. Did you read my article? I wrote that article. No, I have no idea दोस्त कौन से आर्टिकल के बारे में बात कर रहे हो. Great to have you back for another cricket team, Mr. Gomes. Thank you, my friend Shubham. Thank you. Many congrats on the Archie release. Thank you, my friend. Thank you so much. By the way, regular viewer from Connecticut. Aha, Connecticut, where my father's side of the family comes from. Rarely asked question though. You one of the most enjoyable parts of the Archies. Kanika, thank you very much. I know I've kept that 2 minute 40 second mark, so I know your reply will come late. But let me know where in Connecticut you come from. There was another viewer, not you, Kanika. There was another viewer from Connecticut who often used to pop up during the IPL. I'm forgetting that viewer's name, but there seems to be two of you who live in Connecticut. I love that state. I mean, New Haven, a lot of memories from New Haven, especially. So yeah, let me know which part of Connecticut you stay in. I've driven through that state so many times, from Boston to New York. जी हाँ दोस्तों, और कुछ सवाल है तो बताइए. बहुत दिनों बाद आया हूं तो आज मैं काफी टाइम बिताने को तैयार हूं आप लोगों के साथ. नॉर्मली तो मैं रहता हूं 30-35 मिनट तक, बट इट्स बीन अ व्हाइल, तो लेट्स कैच अप. बाय द वे, अगर आप यहाँ पहली बार आए हो तो प्लीज लाइक बटन दबाइए, शेयर करिए वीडियो. इतनी बार कह चुका हूं, विनती कर चुका हूं, दरखास्त है मेरी आपसे कि अगर आप ये लाइक बटन दबाओगे तो इस वीडियो की रीच बहुत बहुत बढ़ पाएगी. Mr. Gomes, hope the management does not prepare potholes. Yes, yes. You've asked this question before also, and I gave my answer. I said they should not. Yes, I also addressed the Ben Foakes issue. Ben Foakes, long overdue, the best keeper in England and a pretty decent batsman. But unfortunately, because of the Johnny Bairstow fascination, oftentimes Ben Foakes ends up sitting out. So let's hope, because Ben Stokes, I mean, I've been a big fan of him since I first saw him keep. But unfortunately, when keep batting, I think they sort of hold that against him, but he's not a bad batsman, is he? Yes, so coming back to today's match, Saint Jo, हाँ, here we go. हाँ, मैंने कहा था ना बहुत कम वहां पे मैचेस हुए, केवल 2 अंतरराष्ट्रीय T20 मैचेस हो चुके हैं सेंट जॉर्जेस पार्क पर. एक 2007 में और एक 2020 पे. दैट्स नॉट इनफ टू जज. अब पता नहीं वहां का डोमेस्टिक रिकॉर्ड क्या है, लेकिन मैं इतना नहीं जानता हूं. क्या सवाल आया है? Did you catch the under 19? My friend, I have not watched any cricket for the last about 7 days. Not at all. मुझे ब्रेक चाहिए था. मैं बहुत खुश हूं कि उस ऑस्ट्रेलिया सीरीज को बीच में छोड़ने के बाद मैंने कोई भी क्रिकेट नहीं खेला. मैंने खुद 2 मैच खेले, उसके लिए मैं बहुत खुश हूं, बट मुझे ब्रेक चाहिए था. मेरे कान से क्रिकेट का खून निकल रहा था. मैंने कहा भैया, जितना बड़ा क्रिकेट प्रेमी मैं भी हूं, मुझे ब्रेक चाहिए. So yes, I have not watched any. I mean, I think I watched a couple overs of Glenn Phillips and Mitchell Santner batting in that second test match. But uske baad, I have not watched any cricket. आज से I did sit down on Sunday to watch the match. पर वो मैच नहीं हुआ. मैंने कहा भैया, ये ऊपर वाले से इशारा है कि भैया एक दिन और ले लो, क्रिकेट से ब्रेक ले लो. Come back fully recharged. So also I got sick for 3 days in the middle as well. I had a very strange bug. So from today, hopefully I will resume watching cricket. Shubham, बताइए, और कुछ सवाल हैं और कुछ जवाब है, आप लोग पूछ सकते हैं. इट्स कनिका जैन. मैं आपका जवाब का इंतजार कर रहा हूं कि आप कनेक्टिकट में कहां रहती हैं. Yep, how many of you were surprised by the fact that there's only, आज के मैच को जोड़कर, there's only 5 T20I matches left for Team India. One got washed out, 3 against South Africa, 2 now because one is washed out, and then 3 against Afghanistan. We have good seam bowling all-rounders like Venki Iyer. He does not bowl in domestic, my friend. He hardly bowls in domestic, and he does not bowl in the IPL. Like I said,
IPL is the criteria for selection to India's T20I team. And when you go two IPLs without bowling an over, when you're Shubham Dubey, who's not bowled in the IPL for two seasons now, you're not going to get selected. Prerak Mankar, as good as he is, if he's not able to nail down an IPL spot, he will never be considered a Team India player. Hunger Gerkar, very raw. I think just one or two domestic seasons. Um, Still too far down the lane. Raj Angad Bawa, again, like I said, अंडर 19 से आप कुछ निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हो. आपको पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में परफॉर्मेंसेस देने होंगे. उसके बाद से आपको आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा. और आईपीएल में अगर आप आईपीएल में बॉलिंग नहीं डाल रहे हो तो आप एक ऑलराउंडर नहीं कहलाया जा सकते हो. राहुल तेवाटिया recently resumed bowling for Haryana in domestic, but he does not bowl a single over in the IPL. He cannot thus be classified as an all rounder. That's why I said to the earlier comment, show me three seam bowling all rounders, not spinners, who bowl throughout the domestic season and then who are given the chance to do that in the IPL. ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है हार्दिक पांड्या के सिवाय. विजय शंकर काबिल ऑलराउंडर हैं. आईपीएल में बहुत बहुत कम डालते हैं. तमिलनाडु के लिए बहुत बहुत कम डालते हैं. आप उन्हें एक सीम बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं कहला सकते हो क्योंकि लाइक आई सेड, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, आपको अगर टी20 वर्ल्ड कप खेलना है तो आपको आईपीएल में सीम बॉलिंग हर एक मैच में डालना पड़ेगा. एमएस धोनी ना ही शिवम दुबे को गेंद देते हैं और केकेआर वेंकटेश अय्यर को ओवर नहीं देते हैं. um, Same with Tewatia, he does not get to bowl for Gujarat. This has also been amplified, like I mentioned many times, and many of you have also raised this. The impact player rule does not encourage all rounders to bowl. So I challenge you once again, show me three seam bowling all rounders who do this job, the all round job, in the SMAT, in the Vijay Hazare Trophy, and then in the IPL. It's because only Hardik Pandya bowls through the IPL that he gets to be called an all-rounder. ऐसा कोई नहीं है. I am from New Haven. क्या बात है? New Haven. That's where my grandmother lived for many many years. My grandfather was there. He was at Yale. My father went to Yale. His brother went to Yale. Long deep connection with New England and especially New Haven. There's a picture. I don't know if you can see it. There's a picture right there behind of my father and his father and me in the backyard at New Haven. I'm forgetting the street name. There were two. We lived in three different places. The most recent one, जहाँ पे मैं शायद late 99 नहीं मैं 2001 तक वहां पे गया जब मेरी दादी वहां रहती थी. It was you cross Yale, you keep going past the campus, and there's a road that goes up. There's a hill. Was it called Hale Avenue? There was a bunch of condominiums on the left, and my dadima lived there until about 2000 2001. Usse pehle they were, I think it's called Hale Avenue, and then Kanika, I can't tell you because I was too young, but I have a lot of memories of coming from India when I was 3 and 5, and then maybe 7. Um, yeah, I forget the name now, but good to see someone from New Haven. Wish you all the best. Have a great week ahead. Now that you're on Netflix, will we see you in the Celebrity Cricket League soon? किसी और ने मुझसे ये कहा था कि भैया अब तो आप हमारी टीम में नहीं खेलोगे, अब तो आप सीसीएल खेलोगे. मैंने कहा बक, मैं तो लॉयल हूं, मैं अपनी यही नोएडा वाली टीम के साथ खेलूंगा मैं. Jay bhai, many have pointed out blatant age fraud by Pakistani team in the ongoing Under 19 Asia Cup. How do you rate Pakistan's chance in Australia? Also, it was great to see you in the celebration. Well, my friend, like I said, I've not been following cricket for the last 1 week, so I do not know what's happening with the age group, but I'm not surprised. Most Asian teams do this. How do you rate Pakistan's chances in Australia? Very, very poor. And it was great to see you in the Archies. Thank you, my friend. Thank you so much, my friend Atul. और दोस्तों अगर और कोई सवाल नहीं है तो फिर बातों का सिलसिला यहीं पे बंद करते हैं, विराम लगाते हैं शो पर. आई एम बैक. आई विल बी डूइंग शोज फॉर यू एट लीस्ट 5-6 टाइम्स अ वीक. आई विल ट्राई मंडे टू फ्राइडे रेगुलर. ऑफ कोर्स जब वीकेंड्स में होते हैं मैच तो मैं तब से आपसे जुड़ूंगा. Does BBL remove X Factor rule? Again, BBL, I don't see too many all rounders coming in and bowl, right? What the impact players rule does is
it basically discourages or nullifies the all-round quotient. So yes, it's fun to have a Venkatesh Iyer come in as your X factor player or your impact player and score 100 against Mumbai at the Wankhede Indian against Mumbai Indians at the Wankhede, especially when he's your fantasy captain like I had him. But he's not bowling, so it removes the player who until 2 years ago was being touted as Hardik Pandya's replacement, and now that same player doesn't bowl at all. So it's a strange one, this impact player. Also, I don't agree with the permanent test center stock recently. It reeks of regional hegemony as a guy from UP would love to see test here. I know, but I don't think that talk is actually going to see the full light of day. There'll be certain venues, but again, I mean, I wouldn't take what these guys say too seriously. Obviously, they've planned it out. I also read that article, but I wouldn't take it too seriously right now. You the fact is इंडिया के अंदर आपके पास बहुत 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 कम वर्ल्ड क्लास वेन्यूज हैं तो क्या होंगे ये टेस्ट वेन्यूज वर्ल्ड क्लास वाले तीन तो हैं शायद हमारे पास तो मुश्किल है बट who knows sometimes regional politics regional loyalties do end up trumping common sense or the greater good when it comes to Indian cricket. But anyways, guys and gals and everyone here, lovely to be back. I'll see you tomorrow post the match. Hopefully, आज पूरा match हमें मिले. Um, and we'll do a nice review of tonight's match tomorrow morning on this channel. Stick around. Have a great day. Jai Hind.